Can you guys see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is question number 40. Just a second. This is question number 40. Which commission evolved the innovative concept of Parivarik Mahila Lok Adalat for redressal and speedy disposal of cases under Legal Service Authority Act 1987? नालसा का नाम सुना आपने? So which committee or commission जिसने पारिवारिक महिला लोक अदालत का कॉन्सेप्ट जो था उसको बनाया, ठीक है, उसकी फाउंडेशन रखी अंडर दिस एक्ट? नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन, कमिटी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, विमेन्स इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया विमेन्स एसोसिएशन? बताओ। वन होगा आंसर में, राष्ट्रीय महिला आयोग। मैम नंबर 1। सबको यही लगता है? देखो पार्टिसिपेट सबको करना पड़ेगा, कोई एक दो लोग हैं जो हमेशा बोलते हैं। Okay, let us see इसका आंसर. This is 74007. हाँ, इसका 1 है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। बाकी तो उतने प्रॉबल लग भी नहीं रहे थे आंसर में, बहुत ऐसे बनाए हुए से लग रहे थे। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नालसा जो है आई थिंक आप लोगों के नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है, लॉ एंड गवर्नेंस वाली यूनिट के अंदर। अगर नहीं है तो फिर वो आर के गुप्ता वाली जो बुक है ना, उसके अंदर ये दिया हुआ है। एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइस कि आर के गुप्ता बुक जो है वो जितनी मर्जी आपको सिंपल लगे, आउटडेटेड लगे, उसको फिर भी एक बार गो थ्रू करना जो है डोंट हार्म यू, ठीक है। Then we have arranged the following texts in chronological order. Okay, तो बुक्स को ईयर्स के हिसाब से लगाना है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स, विमेन्स एस्टेट, सेकंड सेक्स, फेमिनिन मिस्टेक। बताओ कौन सी आई पहले? मेरे को आंसर मत बताया करो डायरेक्टली, मेरे को पहले ईयर वाइज ये सब कुछ बताओ, कौन कौन सी बुक्स कौन कौन सी ईयर में आई। सेक्सुअल पॉलिटिक्स कब आई थी? मैम 1949। हाँ जी। सेक्सुअल पॉलिटिक्स आई आस्क्ड, नॉट सेकंड सेक्स। सेकंड सेक्स की? हाँ मैम 1970। मैम सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970। 1970, ठीक है। 1949 में कौन सी आई थी फिर? मैम द सेकंड सेक्स। सेकंड सेक्स किसने लिखी थी सेकंड सेक्स? सिमोन द बुअर ने। सिमोन द ब्यूअर, ओके, 1949 के अंदर। फिर फेमिनिन मिस्टीक? 1960 मैम। हाँ, I think 1960 or 61. I think it was 19 मैम 1963। 1970। 1963। सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में। Who wrote this book, Feminine Mystique? Betty Friedan मैम। Betty Friedan। सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है ना, 63, ठीक है। विमेन्स एस्टेट किसकी बुक है? जूलियट मिचेल मैम। When was it published? 1949। Women's Estate?
बताओ, ये इजी इजी तो सारी बता देते हो आप लोग। Put it second. आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे हिसाब से 1984 में। आई एम नॉट श्योर, विल चेक दिस, ओके। 1 सेकेंड यार, इसको क्या दिक्कत हो गई है। मैम 1971 कौन सी? women's state. आई डोंट थिंक सो। एक मिनट। Ma'am, I think it's 1971 only. Hmm. Juliet Mitchell. Yeah, ma'am. Okay, let me check. Women's estate. इसमें या इज 1971 गुड। ठीक है। आई डोंट नो व्हाई आई थॉट कि इसका 1984 है। देयर इज सम अदर इम्पोर्टेंट बुक जो कि 1984 में पब्लिश हुई है। कोई गेस करना चाहेगा कौन सी है? इसके ऊपर ना काम करना भी मुश्किल है। 1971 कौन सी बुक पब्लिश हो सकती है 1984 में? बताओ। चलो, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, बिकॉज आई नो इट इज अ रैंडम गेस इस तरह से वो करना कि 1984 में कौन सी बुक पब्लिश हुई थी। बट दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, कल क्लास होगी तो कल आप लोग मुझे आकर के बताओगे 1984 में कौन सी बुक पब्लिश हुई थी, किसकी थी, और ऑल्सो द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट बुक। ठीक है जी। और इसको लगा लो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्या इसका सीक्वेंस बनता है। दिस इज डी। एक ही ऑप्शन में डी सबसे पहली बार है। लेट अस चेक। डी। बी। बी क्यों आ रहा है इसमें पहले? Okay, so this is not D, yaar. Goodness. C should be first, no? Okay, second 6 का 49. हाँ तो Ma'am, इस I think it's option number 3. C, D, A, B. A B. ठीक है, तो second 6 comes first, then comes feminine mystique in 1963, Betty Friedan. ठीक है, then sexual politics 1970 किसकी बुक है? Ma'am, by Kate Millett. 8 minute. Yes. And then women's estate 1971. उस हिसाब से the correct answer should be 3. Let us check that I forgot to record the class. Yeah. Okay, no, it is already on the phone. मेरा दिमाग कहीं खोया हुआ है आज। What is this 078? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी। अब एक चीज बता दूं कि ऑल ऑफ दीज बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इनके ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कोर आर्ग्यूमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू विल सी कभी कभी वो लोग एग्जाम के अंदर ना कोर आर्ग्यूमेंट किसी बुक की पूछ लेते हैं। आई नो बहुत रेयरली पूछते हैं, बट स्टिल। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, जिन्होंने फेमिनिस्ट थ्योरी को शेप करा, एक तरह से दुनिया को बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल पॉलिटिक्स और द बुक सेकंड सेक्स और द फेमिनिन मिस्टीक, जिसको बोला जाता है कि सेकंड वेव लेकर के आई फेमिनिज्म की वाली बुक। तो ये सारी बुक्स जो हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए। ठीक है, डोंट गेट लिमिटेड टू ईयर्स और ऑथर्स। ओके। Then we have, okay, my favorite, following acts chronologically based on year of enactment. ठीक है। Preconception, prenatal diagnostic techniques act, PCPNDT, protection of women from domestic violence act, prohibition of child marriage act, equal remuneration act. बताओ। Ma'am, I think it's option number 3. टेल मी एक एक करके। I think a Prohibition of Child Marriage Act came first. Which year? Not remembering the date, ma'am. I think 1950.
50 something it was, 1950 something it was, I guess. No, there have been many years because there have been. Yeah, I'm trying to remember. Oh, that's okay. That's okay. Just attempt it. Okay, try to attempt it. Okay, बाकी लोग. Protection of Women from Domestic Violence Act is 2005. Yes, 2005. Very important act. Okay, which section did it add to IPC, Indian Penal Code? If someone has filed a case of domestic violence on someone, which section of IPC will be invoked in that case? This is like general knowledge है, तो आपको भी ना women studies के भी पता होना चाहिए. Anyways, इसको पढ़ लेना, ठीक है? This is a very important act. It is उसके section. नीचे से छोटा वाला बुक कर दीजिए तो. हाँ. It is section 498A. ठीक है, जाके देखना इसको. नहीं Is इसको the और होगा. history related to it. Okay, उसको देख लेना. Okay, when did PCP NDT Act came? Pre-conception and prenatal diagnosis. 2003. It was amended in 2003. When did it first come? I mean 1994. So it is here asking PCP NDT. Which year then? Ma'am, it was prenatal, which was in 2000 in 1994, but then it was amended in 2003 and it became the Preconception and Prenatal Diagnostic Act. Okay. Because यहाँ पे वो लोग पूछ रहे हैं pre-conception. ठीक है, तो ये amended act है. और can you tell me the significance of this amendment? Why was it amended? This 2003. Sorry for this writing. ये कर्सर काम नहीं करता है. का है वो. बताओ. Why was PNDT Act amended? What was the need to make it PCPNDT? Ma'am, to regulate the sex selective techniques that was done previously, like amniocentesis and other ultrasound measures that were done to select the sex of the child in order to decrease female feticide, ma'am. Okay, no, just one term. Which technology had come in because of which a need was felt to amend the act? Just focus on this thing here, preconception. Earlier it was only prenatal. Prenatal क्या होता है? बताओ. So I won't tell you this because clearly you people need to revise because this is very important. Okay, that is why I'm focusing this much on PCPNDT. Okay, because it is very important. Many questions have been asked from this act time and again. Okay, go through this wala unit again. Okay, and focus specifically on this act. Okay. Then is This hmm? What did you say? the machine. Your voice is breaking here. Can you type it out in the chat box? Your voice is breaking. Anyways, let's move to this Prohibition of Child Marriage Act. Batao. There are at least three child marriage
acts, ठीक है, which have been enacted time and again. Tell me all 3 years. Have you heard of Sharda Act? When was Sharda Act enacted? Ma'am, 1929. 1929. Then after 1904. independence. Huh? यार ये मेरे एंड पे प्रॉब्लम है, आप लोगों के एंड पे प्रॉब्लम है, ये बताओ पहले तो। Ma'am, the Prohibition of Child Marriage Act 2006. देन उससे पहले भी आई थी एक बार, पोस्ट इंडिपेंडेंस। Ma'am, the 1929 Sharda Act was amended in 1978. 1978, okay, but I think this act here is 2006 वाली, ठीक है। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होती है बिकॉज ये 3 एक्ट्स हैं, ठीक है। जो 1978 वाली एक्ट है, इट इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, CMRA, ठीक है, 1978। तो उसमें पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद दिस 2006 वाली एक्ट जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है। तो इट इज इन 2006, ओके। नाउ इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, अर्लीस्ट वन कब आई थी? बताओ, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जेंडर एंड वर्क वाले यूनिट के अंदर। नाइनटीन 76। इसके बारे में जाकर के पढ़ लेना, ठीक है। यार कर्सर, इट इज 1976। अब बताओ क्या सीक्वेंस बैठता है? What is the sequence now? Ma'am, D, A, B, C. That is option 4, right? Let us check. Says 080. Yes, option 4 is the correct answer. ठीक है। जस्ट एक उसमें ना, मतलब जैसे पहले लुक के अंदर ये इट वाज वेरी विजिबल कि इसका ऑप्शन 4 ही है, ठीक है, बिकॉज इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्ट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पास हुई थी, ठीक है। Then which of the following type of complaint is entertained by the National Commission for Women? Complaint is entertained by National Commission for Women. Cyber crime against women. The issue raised relates to service matters even if they do not involve any deprivation of women's rights. Complaints that are anonymous or pseudonymous. Matters that are pending before a state commission. बताइए जी। क्या लगता है?
Rishika is saying option number 4, matters that are pending before a state commission. बाकी लोग just कोई random guess. Option number 3, complaints that are anonymous or pseudonymous. See, when it comes to matters that are pending before a state commission, एनसीडब्ल्यू के पास कौन से कोर्ट की पावर्स होती हैं? आप लोगों के नोट्स में गिवन है. सिविल कोर्ट की पावर होती है. व्हाट डू वी मीन बाय हैविंग पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट? बहुत ही डिटेल के अंदर मैंने वहां पे एक्सप्लेन करा हुआ है, बिकॉज एनसीडब्ल्यू की पावर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं. बताओ यार, कुछ तो बोलो. सिविल कोर्ट की पावर होने का क्या मतलब होता है? सिविल कोर्ट होता क्या, पहले तो ये बता दो. चलो ये भी अपने नोट्स में जा करके देखना. व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से एनसीडब्ल्यू हैज पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट? ठीक है. आई डोंट नो एनसीडब्ल्यू की एपेलेट अथॉरिटी जो है वो इस तरह से वर्क करती है कि क्या. आई डोंट थिंक सो कि स्टेट कमीशन के बिफोर कोई केस पेंडिंग है, जब तक उसके ऊपर डिसीजन नहीं आएगा तब तक आप एनसीडब्ल्यू के आगे अपील कैसे फाइल कर सकते हो. ऑल्दो एनसीडब्ल्यू खुद से ही कोई केस जो है वो खुद को रेफर कर सकता है. ठीक है, दैट इज जस्ट नॉर्मल जुरिडिकल पार्ट. मुझे ऐसा लगता है इसका 1 ही होना चाहिए, बिकॉज बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट दे दी है साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन. तो ऑब्वियसली आई थिंक एमसीडब्ल्यू कैन एंटरटेन इट, बट लेट अस सी. 006. हाँ, इसका आंसर 1 ही है. ठीक है. देखो ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड स्टेटमेंट लगती है, साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन. ऑब्वियसली एनसीडब्ल्यू कैन डू दैट, राइट? व्हाई वोंट एनसीडब्ल्यू डू दैट आज के टेक्नोलॉजी वाले एरा के अंदर, जहाँ पे सोशल मीडिया एंड अदर टाइप्स ऑफ मीडिया वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है. ठीक है जी. तो ब्रॉड स्टेटमेंट्स जनरली सही होती है, नॉट ऑलवेज जनरली. ठीक है, बिकॉज वो स्पेसिफिकली होकर के कुछ रॉन्ग नहीं करती. फाइन. नेक्स्ट इज एसडीजी इंडेक्स इज एन असेसमेंट ऑफ. बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इंडेक्स आता है वो क्या असेस करता है? ईच कंट्रीज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन द 17 एसडीजीज गिविंग इक्वल वेट टू ईच गोल. Each country's performance on one specific SDG giving equal weight to each target. Each country's performance on SDG 5 giving equal weight to each target. Sustainable development in each country based on income, health, education and food. बताओ. Rishika is saying number 1. Roma is also saying option 1. बाकी लोग आप लोगों ने 17 एसडीजीज पढ़े और याद किए कौन कौन से हैं? ऑल्सो एमडीजीज पढ़े क्या? 8. जैसे क्लास खत्म हो रही है, एक बार आ जाओ दोबारा से.